continue our discussion on single source shortest paths. Today we are going to see how to actually compute the path, right. So, in the last classes we have seen to how to compute the distance of any given vertex from the source when all edges had non-negative lengths. So, today we are going to see how the path can be found, and in the second part we are going to see how to compute single source shortest paths when edges might have negative lengths. Yeah. Okay. So, recall that I am going to start from this picture right away. You have S complement and there was this vertex W, right. So, this should be S complement minus W, let us say. So, this is S and this is the remaining. So, this is the vertex which is going to move from right to left, and when this vertex is moving, it is causing the vertices adjacent to it, their distance labels to be updated. So, if this were a vertex u, so we said that d of u is going to be d min d of u comma d of w plus L of w comma u. Yeah, I have repeated this many times already. Now, essentially what this means is that if du is now getting, this value, then that means that the best path that I am finding from S to u, which includes only vertices of S, and W, right, is going through W, or W is the vertex preceding u on the best path from S to u. So, let me write that down. If d of u equals d of W plus L of W comma u, then the best path or the shortest path from S to u using vertices of S plus W, then the shortest path from S to u has W preceding u, right. I will just stop it at that. So, basically we are saying that the best path from S to u then has the vertex preceding u on this path is W. Yeah, this is the best path from S to u. If this is how the updation was happening, if d of u was getting this value, and this is not the best shortest path from S to u, this is under this qualification using vertices only of S and W, right, because W is now going to the left hand side. Using only these vertices, the best path from S to u will have W preceding u, right. And on the shortest path, so this is the information we will maintain with vertex u. What is the vertex preceding it on the best path that I have found so far? Yeah, by best path I mean the shortest path from S, right. So, with each vertex, we maintain predecessor information So, what do I mean by that? Predecessor of u, if W equals predecessor of u, then W is the vertex preceding u on the best path from S to u, right. So, with each vertex we maintain this predecessor information. And now, however, am I going to use this information to compute the shortest path? So, suppose I have this predecessor information for each vertex. So, suppose this is vertex u, I know that the vertex which precedes u on the best path from S to u is predecessor, I have maintained this information. So, it is vertex predecessor of u. Yeah. Let us say this is a vertex V1. Now, what am I going to do? I am going to look at predecessor of V1.
because this part of the path from S to V1 has to be the shortest path from S to V1. If this is the shortest path from S to U, then this part of the path has to be the shortest path from S to V1. So, so the vertex preceding, so the predecessor of V1 would be the vertex preceding it on the shortest path from S to V1. So, this vertex would be predecessor of V1. Let us say this is vertex V2, right. So, now the best path from S to V2, this part of the path has to be the best path from S to V2, and I have the predecessor information for V2, which tells me what is the vertex preceding V2 on the best path from S to V2, right. So, this I have information, so that is predecessor V2 and so on and on. So, I can keep doing this till I reach the source vertex. Once I have this information, I can just keep tracing it back till I reach the source vertex, and that will give me the path. And how do we maintain this information? Whenever we update the distance label, we have to keep track of this. We update the predecessor, right. So, recall, when do we update or how do we update? So, when we transfer a vertex from the side S complement to the side S, this is the vertex, let us say W, which is getting transferred, yes. Then this is a vertex U whose information I am updating. So, how should I write it now? Can someone tell me? If D of U is greater than D of W plus L of U comma W, then du is dw. What is this saying? If you have found a shorter path, if you have found a better path, dw plus luw is the length of a better path. If this is better than what you already had, if the path you found now is better than what you already had, then you update the information. And what else do I have to do? Spread of u equals w. Okay, that is the only modification you need to make. And then basically now we are storing with each vertex two pieces of information, D and this predecessor information. And now using this predecessor information, you can find the path, right. Keep moving back up. How? Suppose I wanted to find the shortest path from S to a vertex X. So, who can tell me what I should write the code down as? While take a pointer on X. Right. So, what should I do? While not pred X equals null. Right. What I will do is predecessor of my source will set it to null. Okay. So, let us do that somewhere. Predecessor, because the source vertex has no predecessor. Okay. So, I should not use X. Oh no, X is what we are. So, initially let us say X equals V. V is the vertex for which I am finding the. So, this is find shortest path from S to V. So, initially X equals V, and now I will go through this loop while predecessor X is not null. I should say not equal to null. Yeah, what should I do? Put the new so we inserted in X in a stack. Stack. Or we can print it in the Huh? Print it directly, right? Stack क्यों करें? अच्छा, चलिए स्टैक बाद में करेंगे. प्रिंट कर देते हैं उल्टा, आप उल्टा पढ़ लीजिएगा, ठीक है. तो पहले सीधा हम प्रिंट करेंगे. तो क्या करना है प्रिंट करने से पहले?
एंड देन हो जाएगा इससे काम. इनिशियली ये v है, पहले वैल्यू पहली बार जो है प्रीडेसेसर ऑफ v होगी x की वैल्यू, उसके बाद होगी प्रीडेसेसर ऑफ v, ऐसे ऐसे होते जाएगी. जब x की वैल्यू s होगी तब हम बाहर आ जाएंगे, तो s प्रिंट नहीं होगा, तो लास्ट में s को प्रिंट कर देते हैं. समझ में आया सबके क्यों नहीं प्रिंट होगा इस? चलिए कोई नहीं, अब लिख दिया तो अब चेंज नहीं हो सकता है ना. ठीक है, ये सबके समझ में आ गया. So in this manner you can also print out the path. I have printed out the vertices on the path. Once you have the vertices on the path, you can also figure out what the edges are on the path. If you wanted to print out the edges, you could also print out the edges. Huh? Is everyone with me? One suggestion is that instead of having this condition, I can also write x not equal to s. अच्छा, नल कर दीजिए. चलिए नल कर देते हैं, तो फिर अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ऐसा लिख देते. चेक कर लीजिए, छोटी सी चीज़ है. ऑल ऑफ यू कैन फिगर दिस आउट. ओके, नाउ what do the shortest path? So what we have done using this procedure is that we have computed the shortest path from S to every vertex in the graph, not just one vertex but every vertex in the graph. Okay. So let's draw all these shortest paths and let's see what is the subgraph that we get. ठीक है, तो ये हमारा S है, ये हमारा पाथ आया, ये दिस इज लेट्स से द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम S टू वर्टेक्स V, V1 लिख देते हैं. ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो हमारा आए फ्रॉम S टू वर्टेक्स V2 वो ये हो? इफ द लेंथ आर सेम तो ऐसा हो सकता है. किसकी लेंथ सेम होगी? इस वाले सेगमेंट की और इस वाले सेगमेंट की. हाँ, तो ऐसा हो सकता है. ये हम ये वाला पाथ निकालें. सोचिए, इस वर्टेक्स के लिए हमने क्या प्रीडेसेसर लिया होगा? 2 प्रीडेसेसर रखे होंगे. हाँ, डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम की बात हो रही है ना. इसके तो 2 प्रीडेसेसर हो नहीं सकते. इसके लिए हमने या तो इसका जो है फाइनल डी वैल्यू इससे अपडेट होके आई होगी या इससे अपडेट होके आई होगी. ठीक है, तो एक ही प्रीडेसेसर होगा, तो हर एक वर्टेक्स का एक ही प्रीडेसेसर होगा, तो हर एक वर्टेक्स के लिए एक ही एज होगी इन सम सेंस. ठीक है, तो मान लीजिए ये नहीं थी. अब ऐसा हो सकता है क्या कि तो हर एक वर्टेक्स के लिए हमारे पास इन सम सेंस एक प्रीडेसेसर है, एक एज है, एक्सेप्ट फॉर द रूट वर्टेक्स, द सोर्स वर्टेक्स. इसके लिए कोई एज नहीं है. तो कितनी एजेस होंगी इस सब ग्राफ? n-1. राइट, यू अंडरस्टैंड व्हाट एजेस आई एम टॉकिंग अबाउट? आई कैन ऑल्सो कॉल देम द प्रीडेसेसर एजेस. राइट, हर एक वर्टेक्स के लिए वी सेड दिस इज द प्रीडेसेसर वर्टेक्स. राइट, इफ आई एम लुकिंग एट दिस वर्टेक्स u and V is the predecessor vertex, we have kept track of the predecessor vertex information, but we could also have thought of this as the predecessor edge. Right, the edge connecting the predecessor vertex to this vertex is the predecessor edge. तो इस तरह से हमारे पास how many predecessor edges we have? Predecessor n-1 predecessor edges. और इन edges को यूज करते हुए हम S से कहीं भी पहुंच सकते हैं. I can reach every vertex. Yes or no? Because if I take any vertex, I can take its predecessor
edge, go to the previous vertex, go to the predecessor vertex, go to the predecessor vertex, and I said I will eventually reach S. Is it clear that I will eventually reach S in this process? Right? Because we said because the whole point is that this guy got its length from here, which means that we must have been able to reach this vertex in the first place. Yeah, and this guy got its length from here and so on. So we will eventually hit the root. So what is this subgraph? What can we say about this? Right. So if I ignore the directions of the edges, if I forget the directions, then it's a connected subgraph with n minus 1 edges. So it will be a tree, a spanning tree, right? But if I bring back the directions, so note that in a directed graph there is really no notion of a spanning tree, right? So there is another name given to it. It's called a branching. The same thing, right? So it's basically a subgraph with n minus 1 edges such that I can reach from a specific root vertex to every vertex. Such a thing is called a branching. It's not very important if you do not you don't particularly need to remember this term, but you understand what the idea here is, right? That with these edges I can go from the source vertex to every other vertex. In the context of shortest paths, this is called a shortest path tree, right? Because if I just look at this tree, these set of edges, then it's very nice. If I want to find out the shortest path from S to this vertex, what do I have to do? I just follow the unique path that is there in this tree from S to this vertex, right? Or conversely, I go to this predecessor, this predecessor, this predecessor till I reach the root, and that's the path which is the shortest path from S to this vertex. Similarly, the shortest path from S to this vertex is this path, and so on and on. So all the paths, all the shortest paths are getting captured here by just these n minus 1 edges, right? These n minus 1 edges capture for us in a second manner all the shortest paths from the source to all the various vertices, the shortest path from the source to all the various vertices. ठीक है, ये आ रहा है समझ में? नहीं, ठीक है? So this is called the shortest path tree, and we can compute this tree in the same time as was required by Dijkstra's algorithm. We have not spent any additional time here really. Great. Okay. So now you also know how to find out the shortest path. So what remains is what we had mentioned in the last class. If edges have negative lengths, how can you then find out the shortest path? The single. So once again we are talking of single source shortest path when edges have negative lengths. What I mean by this is they don't just have, not all edges have negative lengths. Some have negative, some have positive lengths, right? But we are permitting edges to have all kinds of lengths, negatives and positives, right? So once again we have a source and we are trying to find out the shortest path from this source to all the vertices of the graph, right? Now I am going to assume that there is no negative cycle, because recall we said if there is a negative cycle then this thing is meaningless. Yeah, so there is no negative cycle in the graph. Now first thing, can the shortest path from this source vertex to, let us say, a vertex V, what can you say about the shortest path from S to V? Can it be a non-simple path? You remember what a simple path is? What is a simple path? Does not repeat any vertex. No cycle on the path, right? So can this be a path like this? Huh? Why not? Right. So since this cycle cannot have negative length, which means that this, if I were to just go like this, it would be shorter, because this cycle has positive length, right? So it will only be shorter to go directly like this, right? This cycle could have also 0 length,
in which case it will not be shorter, but it will be this will be a path of the same length. So, there always exists a non-simple path, there always exists a simple path from S to V. Sorry, not there always exists a shortest path which is a simple path, right. This could also be the shortest path if this cycle had 0 length, right. But the point is that there will always be a simple path also. So, we can just restrict our attention to finding simple paths. We will only be interested in finding simple paths. Okay. Now, the algorithm is very simple actually. It is a gossiping kind of an algorithm, right. What does that mean? So, think of each of vertex as a person, okay, and this person has three always. This has 3 people he talks to. Okay. So, whatever information this guy gets, he promptly communicates it to his 3 mates, and what do? They in turn communicate this information to their mates. Right, and so on and on. ठीक है, तो ये होता है हर स्टेप पे. अच्छा, इंफॉर्मेशन कौन ओरिजिनेट, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सोर्स से. सोर्स से ओरिजिनेट होगी. ठीक है, अब क्या होगा? क्या है इंफॉर्मेशन? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग गॉसिप्ड अबाउट? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स. हाउ अनइंटरेस्टिंग. ठीक है. So, what this guy is going to tell these people is that, well, the shortest path I have seen so far from the source, right, this has to be said in a sufficiently hushed tone, right, otherwise it is not interesting, has length 10 say, right. So, he will communicate this to all these 3, and what will this guy do? 10 प्लस जो भी इसकी लेंथ है, मान लीजिए इसकी लेंथ -2 है, इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ -4 है, तो ये क्या करेगा? ये कहेगा नाउ आई हैव फाउंड अ पाथ ऑफ लेंथ 8. तो ये देखेगा कि इसके पास जो अभी तक पाथ था वो लेंथ 8 से बड़ा था या कम था. इसको अभी तक इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन थी ऑन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ इट हैड फाउंड सो फार फ्रॉम द सोर्स. मे बी दैट इंफॉर्मेशन वाज 9. So, now it will quickly change its thing to 8 because it is found a path of length 8 now. Yeah, and maybe इसके पास अब इस पाथ की लेंथ क्या आ रही है? 13. इसके पास एक पाथ था जो पहले 12 का था, तो ये नहीं चेंज करेगा. नहीं आ रहा है समझ में, राइट. और इसके पास एक पाथ था जिसकी लेंथ थी 7. अब इसके पास अब जो आ रहा है वो 6 है, 10 एंड -4. तो ये इसको अपडेट कर देगा, 6 कर देगा, और क्या करेगा उसके बाद? आगे प्रोपोगेट कर देगा. ठीक है. तो एक राउंड में सब लोग यही करेंगे. एक राउंड में सबके सब, जैसे घंटी बजती है, सब जो है अपनी इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करेंगे अपने अपने नेबर्स को. ठीक. तो दैट विल कॉल 1 राउंड. नेबर्स क्या करेंगे? उनके पास इंफॉर्मेशन आएगी. तो अब एक ये नेबर है मान लीजिए, तो कोई एक वर्टेक्स के ऊपर क्या क्या होता है? वो पहले तो प्रोपोगेट करता है टू ऑल इट्स नेबर्स, एंड दूसरी तरफ वो रिसीव करता है फ्रॉम इट्स इन नेबर्स. ठीक है. यहाँ वाला कह रहा है, यहाँ वाला के पास एक पाथ की लेंथ आई 13, इसके पास आई 12, इसके पास आई 9, ये है लेट्स से 4, ये है 1, ये है -1. तो अब ये क्या करेगा? ये सारी एक ही सोर्स से ही आ रही हैं सारी इंफॉर्मेशन. तो ये वाला कह रहा है कि आई हैव फाउंड अ पाथ ऑफ लेंथ 9 एंड दिस इज 4, तो हियर यू हैव अ पाथ ऑफ लेंथ 13. ये कह रहा है आई हैव फाउंड अ पाथ ऑफ लेंथ 12 एंड दिस इज 1, सो यू हैव अ पाथ ऑफ लेंथ 13.
ये कह रहा है कि this is I have found a path of length 13, this is -1, so you have a path of length 12. So what is this guy going to do? It's going to take the minimum of these 3 and It's so original. and if it had some original information, earlier information, it's going to take the minimum of all of them and put that down, right, put that down as the new path length. Let us say original information was more than 12, so that will become a new path length. And this is the information that it would communicate in the next round. ठीक है, सबके समझ में आ रहा है? One round is, in a round everyone, so जब घंटी बजती है everyone talks to their neighbors and sends the information, right? And then each node also gathers the information from its neighbors, updates its value. That's the end of a round after it has updated its value. That is only one level of transfer. Yes. In a round, each guy just talks to its neighbors. Yeah? आ रहा है समझ में? नहीं? The first updation, then transfer. First transfer, then updation. First transfer, then again transfer. No, that will be in the next round. Yeah. So a round begins with the transfer, let's say. Nothing sacrosanct about it. We can also do it the other way around. But let's say the round starts with the transfer. First you transfer. Then when you have gotten information from all your neighbors, yeah, you update. And this is for the entire graphic. All the nodes do the same thing simultaneously. So, but if a node gets information from two different, suppose means it gets from one here, and after a traversal it gets again. So in that case it will. No, it gets, a node will get information only from its in neighbors. That's all. ठीक है, सबके समझ में आ रहा है? तो एक राउंड आप कितने टाइम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? इंप्लीमेंट करने का मतलब समझ रहे हैं आप? पैसे तो है नहीं, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे और फिर जो है गॉसिप करेंगे. सो यू हैव दीज वर्टिसेस, राइट? यू हैव टू इंप्लीमेंट दिस थिंग. So what is the information we are maintaining? With each node we are maintaining this, once again let's call it a distance label. With a node we are maintaining this distance label, right? Now how will you implement one round? How will you implement one round? For all the vertices, it is in degree. in addition vertices and Right, so I take a vertex. So there is no notion of actual transmitting and all anymore, right? This was just to show you the idea. So what does this vertex do? It will look at its in adjacent vertices, इनकी d value लेगा वो, उनमें लेंस ऐड करेगा और मिनिमम ले लेगा और अपने वाले से कंपेयर करके मिनिमम को यहाँ अपडेट कर देगा. तो इस नोड को कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनल टू इट्स डिग्री. तो टोटल टाइम कितना हो गया? नंबर ऑफ एजेस. ठीक है? सो दिस इज हाउ यू विल इंप्लीमेंट वन राउंड. इनिशियल क्या वैल्यूज होनी चाहिए? 0 ऑन द सोर्स एंड इन्फिनिटी फॉर ऑल अदर्स. ठीक है? कितने राउंड्स करने पड़ेंगे हमें? एक राउंड के बाद सारा खत्म? हाँ? If in a round nothing changes, then we can stop. अच्छा, पर कितनी बार ऐसा, मतलब बहुत सारे बार करना पड़ेगा. हमें तो वर्स्ट केस एनालिसिस करनी है, हमें पता करना है कि कितने राउंड्स हमें चाहिए. तो आपके विचार से कितने राउंड्स के बाद इंफॉर्मेशन चेंज हो ही नहीं सकती? हर एक वर्टेक्स के ऊपर फाइनली उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा फ्रॉम द सोर्स. वी विल हैव टू प्रूव दैट. Max of length of all the shortest path from S to all the vertices. So if we define a notion of level means the first one to Find the the length of all the shortest path from then S it to will be all the the vertices. order of level means. चलिए लेट्स सी.
ये एक वर्टेक्स, ये हमारी सोर्स वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स वी है, कोई आर्बिट्री वर्टेक्स हमने ले ली, ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। कितनी एजेस हैं? 5 एजेस हैं शॉर्टेस्ट पाथ में। लेंथ इसकी 5 नहीं है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड नंबर ऑफ एजेस ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग लेंथ्स, एज लेंथ्स, राइट। उसमें कुछ नंबर ऑफ एजेस होंगी। कितनी एजेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं ऑन अ शॉर्टेस्ट पाथ? n-1। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ सिंपल होगा, इसलिए मैंने वो सिंपल वाली कहानी दी थी आपको, ठीक है। तो n-1 एजेस से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस पे 5 एजेस हैं, कोई बात नहीं। अब पहले राउंड के बाद इस वर्टेक्स पर अच्छा, यहां से अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम S to V, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम S to दिस वर्टेक्स? दैट प्रॉपर्टी कंटिन्यूज टू होल्ड ट्रू, जो हमने पहले वाली डिस्कस करी थी विद पॉजिटिव एज वेट्स, that was independent of whether the edge lengths were positive or not. Shortest path from S to this vertex will be this. There cannot be a shorter path, because if there were a shorter path, then this would not have been the shortest path from S to V. Similarly, shortest path from S to this would have been this one, L1 plus L2 plus L3, and so on. Yeah. So the claim we are going to make is if the shortest path from S to vertex X has L edges on it, then d of x, then d of x what do I want to say? Then d of x gets the right value. What does the right value mean? The value of the shortest path after or after L rounds. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर S से X, X से V, जो भी आप मानना चाहें, इस पाथ पे L एजेस हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि आफ्टर 5 राउंड्स दिस वर्टेक्स विल हैव द करेक्ट लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ. व्हाई? वेरी इजी. This claim is true. We'll prove the claim by induction on L. Right? So L equals 1 के लिए is this true? Yes. Because अगर कोई vertex है जिसका shortest path from S is just this direct edge, then पहले राउंड के बाद हमें इस vertex पर वो information होगी, क्योंकि यहाँ इस vertex S ने 0 ट्रांसमिट किया होगा और वो हमने इस एज लेंथ को ऐड करके इसके ऊपर करेक्ट डिस्टेंस वैल्यू ऑलरेडी आ गई होगी वेरी फर्स्ट स्टेप पर. ठीक है. अब हम ये मान रहे हैं कि फोर्थ स्टेप पर इस वर्टेक्स पर करेक्ट वैल्यू आ गई है. तो अब ये वर्टेक्स क्या करेगी नेक्स्ट राउंड में, फिफ्थ राउंड में, ये इंफॉर्मेशन इसको ट्रांसमिट करेगी. तो इस वर्टेक्स पर फिफ्थ राउंड में वैल्यू क्या आ जाएगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 वैल्यू पहुंच जाएगी. और क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ है उससे कम कभी नहीं होगी वैल्यू. वैल्यू कम कब होती है? देखिए, वैल्यू हम तभी घटाते हैं व्हेन वी फाइंड अ बेटर पाथ. इफ बिकॉज देयर इज नो बेटर पाथ वी विल नेवर बी चेंजिंग द वैल्यू लेटर. सो उसकी वैल्यू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 हो जाएगी आफ्टर 5 स्टेप्स एंड देन वी इट विल नॉट चेंज बियॉन्ड दैट एनीमोर. आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? When you look at a vertex and you look at its in-adjacent vertices, so you take the value of the in-adjacent vertices which has not been updated in that round.
So there is a vertex whose value has been updated right now, and it has an out-adjacent vertex, and you reach to the vertex after that. So will you consider the new value or the old value? बड़ा confusion है, हाँ, ये new value, old value. Let's forget about new values, old values. Let me write down the code, हाँ, तो उससे सारा confusion clear हो जाना चाहिए. तो क्या करना है, हमें एक राउंड में बताना है कि हम क्या करेंगे. क्या करेंगे हम एक राउंड में? For all we do. हर एक वर्टेक्स v के लिए हमें कुछ करना है. क्या करना है? बताइए बताइए. For all w in adjacent to v do what? D of v equals min d of v comma d of v comma d of w plus L of vw. अब क्या करना है? क्यों? नेक्स्ट राउंड क्या? व्हाट नेक्स्ट राउंड? फॉर I equals 1 to कितनी बार करना चाहिए मुझे ये? कितने राउंड्स करने चाहिए? n minus 1 2. खत्म. वेस्टफुल अभी नहीं करते. वर्स्ट केस से मतलब है हमें. ठीक है, जब आप इंप्लीमेंट करेंगे यू विल ट्राई टू रिड्यूस द रनिंग टाइम अ बिट. द वर्स्ट केस विल रिमेन द सेम. ठीक है, शुरू का इनिशियलाइजेशन और कर देते हैं. डी ऑफ एस इक्वल्स इंफिनिटी फॉर ऑल वी इन वी माइनस एस. डी ऑफ वी इक्वल 0. सॉरी, डी ऑफ एस इक्वल 0 फॉर ऑल वी इन वी माइनस एस. डी ऑफ वी इक्वल्स इंफिनिटी. कोई राउंड शाउंड का कोई चक्कर नहीं, सब खत्म कर दिया मैंने. आप अगर राउंड की तरह सोचना चाहते हैं तो ये एक राउंड है. कितने राउंड्स कर रहे हैं हम? n-1 राउंड कर रहे हैं. ये आई कहीं यूज नहीं हो रहा है अंदर. दिस इज जस्ट टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स. यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस. एक राउंड में हम क्या करते हैं? हर एक वर्टेक्स के साथ एक ही हरकत करते हैं. क्या करते हैं? उसके इन वर्टिसेस, इन एडजेसेंट वर्टिसेस से उनकी डिस्टेंस लेबल्स लेते हैं, उनमें लेंथ ऐड करते हैं और अपडेट कर देते हैं. खत्म. हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है कि किस ऑर्डर में कंसिडर करना है. उससे कोई मतलब नहीं है कि किस ऑर्डर में करनी है. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने पहले उसको अपडेट कर दिया, उसके बाद उसकी वजह से वो नेक्स्ट वाला भी बेटर हो गया. मतलब 2 राउंड का काम एक ही साथ हो गया, ऐसा हो सकता है. पर एक राउंड का काम तो एक बार में हो ही जाएगा. समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए. इतने राउंड्स में क्यों? Why did I only put down n-1 and no more? Because I argued in this claim that अगर हम जब L राउंड्स कर लेंगे तो इसके ऊपर करेक्ट वो आ जाएगा. ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने राउंड करने हैं? What is the longest, what is the maximum number of edges that there can be on any shortest path? We've argued that on any shortest path there can be no more than n-1 edges, because any shortest path there is always a simple, there is always a shortest path which is simple, does not repeat edges. So it has at most n-1 edges on it, and so I need to repeat it only n-1 times, no more. Yeah? So that's the entire thing. कुछ नहीं चाहिए, कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं. क्या रनिंग टाइम हो गया इसका? एमएन. देखिए कितना आसान है, आप लोग भी बता सकते हैं. ठीक है? Is it clear to everyone?
ओके अब बचता है, क्या बचता है? तो आपने सिंगल सोर्स तो आपने सब सीख लिया। नेगेटिव अगर एज लेंथ है तो आप क्या करोगे? ओके, should we do the correctness for this? Yes, let's do the correctness. Why is it correct? Why have we computed the shortest path? Have we computed the shortest path? Huh? क्या? Looks like, huh? Why? देखिए, is it clear that after round 5 this vertex V is going to get a distance label of L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5? It's going to get a distance label of this or smaller. ये तो clear होना चाहिए। ये वाला लेबल तो इसके पास पहुंच ही जाएगा। हो सकता है इससे छोटा लेबल भी पहुंच जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि इससे छोटा लेबल नहीं पहुंचना चाहिए इसके पास। किसी और पाथ से लेबल पहुंचेगा, हो सकता है वो इसका से छोटा हो। आई एम एज्यूमिंग दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। Right, so exactly. So after one round, this guy has to get a label of L1, that is completely clear. After second round, this guy is going to get a label of L1 plus L2 or less. Right? This guy is going to get a label of L1 plus L2 plus L3 after 3 rounds or something even lesser. After 4 rounds, this is going to get a label of L1 plus L2 plus L3 plus L4 or something lesser. This guy is going to get a label of L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 after 5 rounds or something lesser. So for correctness, we need to argue that this guy is not going to get anything lesser than L1 plus L2 plus L3 plus L4. Right? If you have argued that, then we have that it gets exactly the distance label. Right? So we have to argue that a vertex cannot get a distance label which is lesser than the length of a path from the source to that vertex. Yeah. When I give a vertex a certain distance label, it is because I have found a path of that length from the source to that vertex. That I have to convince you about. Yes, and that follows from the way we are doing things. Right? That will be a proof by induction. Yeah. So what should we induct on? So what is the claim we are trying to make? Let's write that down. If a vertex gets a certain distance label in round R, then a certain distance label, let us call this D, then we have found a path of length D from, if a vertex V, from S to V. This is what we are trying to argue. Yeah. Basically what I am saying is that if a vertex is getting some distance label, it's not that हमने arbitrarily generate कर दी है, वो इसलिए आया है उसके ऊपर distance label क्योंकि एक path उस length का हमें मिला है. Why is this claim useful? इसका ये मतलब होगा अगर इस vertex पर एक L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 से कम distance label पहुंचता है, तो इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा path आया है जिसकी length L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 से कम है, which means that ये जो path है, this is not the shortest path. Contradiction. Right? Why is this true? अगर हमारे एक vertex पे distance label D आ रहा है एक certain round में, तो हमें उस length का एक path मिला है, ऐसा क्यों true है? कि किस पे induction करना चाहिए हमें यहाँ पे? R पे? वही integer quantity है यहाँ पे, D तो integer है ही नहीं. D integer है? हाँ नहीं, हमने ये नहीं कहा है कि हमारी लेंथ इंटीजर है कहीं भी. सो डी नीड नॉट बी इंटीजर. डिस्टेंस लेबल नीड नॉट बी इंटीजर, राइट? इट्स जस्ट द लेंथ ऑफ द पाथ. इफ इट्स द लेंथ ऑफ द पाथ देन इट नीड नॉट.
तो r जो है हमारा इंटीजर है, इस पे इंडक्ट कर देते हैं। इस पे इंडक्ट करेंगे तो क्या, सपोज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अप टिल राउंड r minus 1, then in round r if this vertex v is getting a certain distance label, it is getting that distance label, right, because either that was the distance label on it or because one of its neighbors, so this vertex is getting a certain distance label d, तो ये d कहाँ से आया होगा, क्योंकि एक इसका नेबर होगा, राइट, सो हम मान लीजिए इसका नेबर u है, सो d बराबर होगा du प्लस एल यू वी के, ठीक है, यस और नो। पर ये जो du था ये तो इसका लेबल था राउंड r minus 1 में, यस, हाँ, it could have been, Sir, you could have been around R. You could have got its label in this particular. It would have been updated in the same round. it could have been updated in the same round, so you're worried about that aspect, is it? Then we have to do induction on the. On? Then you have to go back one step from. Right, then we'll have to do a double induction kind of a thing, right? So let's not worry about that. I will modify the code to take care of that, right, so that everything gets updated simultaneously, ठीक है. But let's just assume that this vertex u is got, this du was its label in round r minus 1. So now we can apply our induction hypothesis, which means that we found a path of length du from s to u, right, that's what the induction hypothesis is saying. अगर इस पे राउंड r minus 1 पर डिस्टेंस लेबल u है, du है, तो इसका मतलब यहाँ से s से यहाँ तक एक पाथ मिल चुका है हमें जिसकी लेंथ du है, and this plus this means that I have now found a path from s to v of length exactly du plus luv, which is rd, ठीक है. मतलब कुछ भी नहीं है इस प्रूफ में, इसलिए जो है समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ समझने को है ही नहीं, मतलब आप देखेंगे तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है इसमें, राइट, दैट्स कंप्लीट, ठीक है. सो नाउ देयर इज अ वैलिड डाउट, राइट, सो यू गाइज आर वरीड अ लिटिल बिट कि जो है हम ये जिस तरह से अपडेट कर रहे हैं उससे ऐसा हो सकता है कि कुछ हमने पहले अपडेट कर दिया हो, जैसे मैं कह रहा था कि अब 2 राउंड का काम हो सकता है, 1 राउंड में आप कर रहे हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इफ यू लुक एट द एल्गोरिथम मोर केयरफुली, बट लेट्स मॉडिफाई द थिंग सो दैट वी डोंट डू दैट एट ऑल, ठीक है. तो वो क्या करेंगे, इनका आइडिया अच्छा है, एक ओल्ड डी अरे हो और एक न्यू डी अरे हो, ठीक है, जो आपके पिछले राउंड के डी लेबल्स थे वो एक अरे में होंगे, और ये जो हम अपडेट कर रहे हैं ये हम वापस उसमें नहीं स्टोर करेंगे, एक नई अरे में स्टोर कर लेंगे और राउंड खत्म होने के बाद उसको वापस उसमें कॉपी कर देंगे, ज़्यादा काम करेंगे, नहीं आया समझ में, राइट. हमारे पास 2 अरे रहेंगी, ये अरे होगी जो हमारे जिसमें एक्चुअल डिस्टेंस लेबल्स रहेंगे. अब कैसे हम अपडेट करेंगे, इसमें हमारे सारे डिस्टेंस लेबल्स हैं, अब हमें इसको u को, ये v को हमें अपडेट करना है, तो हम यहाँ से देखेंगे क्या डिस्टेंस लेबल्स हैं, ठीक है, यही काम करेंगे, पर जो वैल्यू अब हमारी फाइनल आएगी वो हम इसमें वापस नहीं डाल देंगे, उसको हम इसमें डालेंगे, दूसरी अरे इसको x कह देते हैं, ठीक है. तो इसमें हमारे इस राउंड के बाद के, मतलब ये इस राउंड के शुरू के डिस्टेंस लेबल्स थे, इस राउंड में जो डिस्टेंस लेबल जनरेट हुए वो ये वाले हैं, और फिर हम इसको वापस इसमें कॉपी कर सकते हैं. तो ये आसान सा काम कर देते हैं. फॉर ऑल वी डू, बताइए मुझे क्या क्या करना चाहिए. सबसे पहले x ऑफ v इक्वल्स d ऑफ v, x of v equals min of x of v comma dw plus lvw, राइट. मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, शुरू में मैंने यहाँ से यहाँ वैल्यू कॉपी कर ली, नहीं ये ठीक है, Just reversing the name would be sufficient. रिवर्सिंग विच No, just put the name to be that. So Up to add find the the names. D of V.
नहीं ये ठीक है, क्यों ये यहाँ क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे सबका मिनिमम लेना है, राइट? तो आई एम कीपिंग द रनिंग मिनिमम इन दिस x, इसलिए मैंने शुरू में उसको यहाँ से असाइन कर दिया, ठीक है? और इस राउंड के ख़त्म होने के बाद मुझे फॉर ऑल वी डू दिस, एंड जब ये ख़त्म हो जाए इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, ये फॉर लूप ये वाला यहाँ ख़त्म हो रहा है और ये वाला फॉर लूप यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है? आप ऐसे कर सकते हैं। करेक्टनेस जो ओरिजिनल था वो भी करेक्ट है, right? In fact, that will be a bit faster than this one because you are kind of doing a little bit more work in each round, right? But this, for this, perhaps the correctness is more apparent, so it's okay if you write it this way, yeah? But even that is correct. It's clear to everyone? Yeah, great. So okay, so the last thing I want to say, and very briefly, is APSP. This is all pairs shortest path, right? अभी हमने सिंगल सोर्स किया है, अब हम कह रहे हैं ऑल पेयर्स। ऑल पेयर्स मतलब एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालना चाहते हैं। तो अगर एज लेंथ पॉजिटिव है तो हम कितने टाइम में ये काम कर सकते हैं? हाँ, एम स्क्वायर एन बार हमें सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, राइट? हर एक सोर्स से आप कर दीजिए, हो जाएगा, क्योंकि एक सोर्स से जब आप करते हैं तो उस सोर्स से आपको सब वर्टिसेस का मिल जाता है शॉर्टेस्ट पाथ। कितने टाइम में मिलता है वो? एम लॉग एन टाइम में। तो एक तो ये हो जाएगा एन एम लॉग एन। और अगर एज लेंथ नेगेटिव भी हो सकती हैं तब कितना टाइम लगेगा? एन टाइम्स एम एन, ठीक है? क्योंकि वंस अगेन एम एन टाइम एक सोर्स से लगा था, फिर आप जो है एन सोर्सेज हर सोर्स से चला देंगे इसको, तो इतना टाइम लगेगा, राइट? ओके, ये जो मैंने टाइम बाउंड बताए हैं, दीज आर नॉट द बेस्ट पॉसिबल, राइट? देयर आर एल्गोरिथम्स व्हिच कैन डू बेटर देन दिस. You will learn about these algorithms in the algorithms course. But let me just tell you what are the better bounds known. So for single source shortest paths with positive edge lengths, हमने किया है m log n, right? The best bound known is m plus n log n. इन दोनों में फर्क है नहीं है? m could be as large as n square, in which case this will be n square plus n log n would be n square, and this will be n square log n, right? So factor log n more. This is single source shortest path when edge lengths are positive. When edge lengths can be negative, right? When I write negative, negative does not mean everything is negative. Please remember this, right? It just means that, in fact, everything is negative तो हम कर ही नहीं सकते, फिर तो नेगेटिव साइकिल हो जाएंगे इसमें, है ना? तो इसका मतलब एज लेंथ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने कितना टाइम किया है? एम एन, ठीक है? बेस्ट पॉसिबल भी एम एन है, यू कैन नॉट, ठीक है? फोड़ दिया। ऑल पेज शॉर्टेस्ट पाथ जब पॉजिटिव लेंथ है तो हमने कितना किया? ये ऊपर वाला एम एन लॉग एन। बेस्ट पॉसिबल क्या है? बस इसका जो है m प्लस एन लॉग एन इन टू एन, ठीक है? मतलब यही वाला जो एल्गोरिथम है इसको आप हर सोर्स से चला देंगे। हमने ये वाला एल्गोरिथम हर सोर्स से चलाया था, आप और कुछ खास नहीं कर सकते, इस वाले एल्गोरिथम को आप हर सोर्स से चला सकते हैं, ठीक है? पर जब एज लेंथ नेगेटिव है हमने कितना किया है? एम एन स्क्वायर,
यहाँ पे फ़र्क है, बेस्ट पॉसिबल है mn plus n square log n, basically the same as this one. Yeah, Is the best known or best possible? best known. No, these are not the lower bounds. These are only the best known. ठीक है? Okay, so with that we will end today's lecture on shortest paths. In fact, that also brings us to the end of this course, right? So we are not going to be taking up any other topic, or this is all we had to discuss in this course.